polymerase chain reaction or PCR, invented by Carey Mullis in 1983. PCR or polymerase chain reaction means to amplify a single or few copies of a piece of DNA and to thousand to million of copies. यानी इसमें एक सिंगल या फ्यू कॉपीज़ एक पीस ऑफ डीएनए की ली जाती हैं और उस सिंगल पीस की मिलियंस या थाउजेंड्स में कॉपीज़ बनाई जाती हैं. टू एम्पलीफाई मीन टू मेकिंग कॉपीज़. इट बेस्ड ऑन द इन विट्रो replication process by using the DNA polymerase enzyme, just like used in the replication of process of the organism within the body. यानी ये इन विट्रो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, बिल्कुल उसी तरह ये रेप्लिकेशन भी है. लेकिन डिफरेंस इज दैट कि ये इन विट्रो किया जाता है, मीन्स के विद इन द लैब किया जाता है. So for polymerase chain reaction or PCR, the machine used is PCR machine or also known as thermal cycler. Thermal cycler means that this machine regulates the temperature stepwise during all the process of polymerization or amplification. यानी ये जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है टिल द एंड उसमें टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है. दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज थर्मल साइक्लर. कंपोनेंट्स of the PCR are template DNA, DNTPs, primers, take polymerase, and the combination of all the components is known as PCR mixture or reaction mixture, which is placed into the PCR machine for amplification process. यही चार कंपोनेंट्स जो हैं ये यूज़ होंगे इस प्रोसेस के अंदर और इनको मिला के इनका मिक्सचर बनाया जाता है जिसको पीसीआर मिक्सचर या रिएक्शन मिक्सचर कहा जाता है. Now we will discuss all these four components one by one. First one, which is a template DNA. The template DNA, it is a target DNA or a piece of DNA to be cloned or amplified. यानी टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए है या डीएनए का वो पीस है जिसकी क्लोनिंग करनी है, जिसकी एम्प्लीफिकेशन करनी है, जिसकी कॉपीज़ बनानी है. दैट इज़ नोन एज टेम्पलेट डीएनए. सेकंड, डीएनटीपीज. डीएनटीपीज आर नोन एज deoxyribonucleotriphosphate. Deoxyribonucleotrophosphates. These are the free nucleotides and these free nucleotides help in the synthesis of new strand. यानी ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. These free nucleotides are of four types. They are DATP, DCTP, DTTP, DGTP. DATP means deoxyribo adenine triphosphate. DCTP means deoxycytosine triphosphate, while DTTP means thymine triphosphate and DGTP means guanine triphosphate, because the strand of DNA consists on four nucleotides that are adenine, cytosine, thymine and guanine. So these are the nucleotides that help in the synthesis of new strand.
Number 3, primers. Primer is a short single-stranded nucleic acid, about 10 to 20 base pairs, having free hydroxyl group at 3' end. प्राइमर्स हमारे पास शॉर्ट सीक्वेंस होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड होता है तकरीबन 10 to 20 बेस पेयर्स का, और 3' एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है था टू इनिशिएट द स्ट्रैंड सिंथेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनीलिंग। यानी यही फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते जाते हैं और नया स्ट्रैंड बनता जाता है। दिस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसिस where the incoming nucleotides comes to attach at the free hydroxyl group to form the new strand, and the 5' to 3' direction, just like during the DNA replication and the living organism. Two sets of primers are used, that is forward primer and the second one is the reverse primer. Number 4th component, which is the take polymerase, the most important component of the PCR, due to the because in take polymerase which is known as DNA polymerase enzyme, and the named polymerase chain reaction is placed after the DNA polymerase enzyme, so that's why it is known as polymerase chain reaction. Take polymerase is isolated from Thermus aquaticus. Take mean Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is a bacterium that lives in the hot springs, having temperature up to 120 degrees centigrade. This take polymerase enzyme, which is known as DNA polymerase, and the living organism used for the replication purpose. So this take polymerase is stable and active at nearby boiling temperature. यानी take polymerase थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम है जिससे इसको आइसोलेट किया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर पे नियर बाय बॉइलिंग टेम्परेचर मीन्स के बॉइलिंग टेम्परेचर विच इज़ द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी एक्टिव और स्टेबल रहता है, मीन्स दैट ऑलमोस्ट because enzymes are proteinaceous in nature and all the proteins at high temperature become denatured. So the take polymerase is an enzyme which is stable and active at nearby boiling temperature. That's why it uses in the PCR. यानी जितने भी हमारे पास पॉलीमरेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उनकी डीनेचुरेशन हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं हाई टेम्परेचर पे। लेकिन जो टेक पॉलीमरेज हैं, चूँकि ये उस बैक्टीरियम से लिया जाता है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसका टेम्परेचर तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से यही पॉलीमरेजेस एज DNA पॉलीमरेज यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द PCR। चूँकि PCR मशीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अप टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, या अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अगर बॉडी का DNA पॉलीमरेज हम यूज़ करें तो वो डीनेचर करेगा, लेकिन यहाँ पे टेक पॉलीमरेज की डीनेचुरेशन नहीं होती, ये स्टेबल रहता है। दैट्स वाई यही टेक पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है, और इस पॉलीमरेज की वजह से इस रिएक्शन को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। Mechanism used for the PCR is following 3 steps are involved in the PCR, that are denaturation, annealing and polymerization. Denaturation, it means the
conversion of double-stranded DNA into single-stranded DNA at high temperature. That is, the double-stranded D is represented as double-stranded DNA at 94 degrees centigrade for 1 to 5 minutes. So this double-stranded DNA is converted into single-stranded DNA as a result of denaturation, and this single-stranded DNA is known as the template DNA or the target DNA, which is to be amplified. यानी denaturation में हम double-stranded DNA को single-stranded DNA में convert करते हैं हाई टेम्परेचर पे. Second step is annealing, where the primer is used, and here the low temperature is used, that is 54 degrees centigrade for 2 minutes, and the annealing occurs, means the primer is attached at the 5' end of the single strand. Two sets of primer are used, that are forward and reverse primers. यानी अनीलिंग में हम प्राइमर को यूज़ करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ 5' एंड पे उसकी अटैचमेंट हो जाती हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर लो रखेंगे, दैट इज़ 54 डिग्री सेंटीग्रेड जस्ट फॉर 2 मिनट्स. नंबर थर्ड, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, एंड विच द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए which is polymerized to form the copies of the DNA. Here the temperature is kept at 72 degrees centigrade for 1 minute, and here the take polymerase and DNTPs are used to form the double-stranded DNA. यानी एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन में टेक पॉलीमरेज यूज़ करेंगे, DNTPs यूज़ करेंगे ताकि न्यू स्ट्रैंड बन सकें और उसकी एलोंगेशन हो सके. हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड जो है उसकी एम्प्लीफिकेशन हो जाए और उसकी कॉपीज़ बनाई जाए, एंड दिस होल साइकिल इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म 1000 to millions of copies. Here is the diagrammatic representation of that mechanism in which that is the double-stranded DNA after denaturation at 94 degrees centigrade it forms single-stranded DNAs, that is one single strand and that is the other single strand, due to the breakdown of hydrogen bonds between them. And this single-stranded DNA, the primer are added, and here the low temperature, that is 54 degrees centigrade, is used to anneal these strands. Two primer are used here, they are forward and the reverse primer. Forward primer is used at the 5' end of that strand, while the reverse is used at the 5' end of the another strand. After annealing, polymerization takes place where the temperature is 72 degrees centigrade, and here the take polymerase and the DNTPs are used to make the copies of these two strands, means these two single strands are converted into the double strand, and the cycle is repeated again and again. It means that a single strand of DNA is converted, a single copy of DNA is converted into two copies of DNAs. यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की डीनेचुरेशन करके उससे सिंगल स्ट्रैंड्स बनाएंगे, फिर सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ प्राइमर को ऐड करेंगे ताकि वो इनिशिएट कर सके न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस को. फॉरवर्ड प्राइमर एक साइड पे अटैच होगा 5' एंड पे, और रिवर्स जो है चूँकि ये स्ट्रैंड उसके ऑपोजिट में है तो वो इस साइड पे 5' एंड पे अटैच्ड हो जाएगा. उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, साथ में DNTPs डालेंगे, टेक पॉलीमरेज यूज़ होगा जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस को एलोंगेट करेगा,
और रिज़ल्ट में 2 कॉपीज़ जो है वो बन जाएगी, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए हमारे पास आ जाएंगे। इस साइकिल को रिपीट करेंगे। सो द 2 copies will make 4 copies, in the 4 will 16 after 16 PCR 32 and so on, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 and 16 से 32 and so on. So that is the diagrammatic representation of the PCR. Applications of PCR, it used in the diagnostic technique, that is for the infectious agents against HIV, HBV and HCV. Second is for the detection of microorganisms in the food samples, water or environment by using specific primers. Number third, genome analysis to generate markers for the construction of physical map or genetic map of an organism. Number 4, it is uses in the DNA sequencing. Number 5, uses in DNA fingerprinting or DNA typing. Number 6, it is uses for the detection of genetic mutations that leads to the genetic disorders like cancer. 7, used in the criminology by performing the DNA analysis, in which the DNA of the suspect is used from the crime scene.